So congratulations. Thank This is a you. really big win. And I think of course, the book is fabulous, but I think also your speech set the tone. Oh, thank you. Thank you. Um, and can you really talk about I think you said that at some point of time that literature is the last sacred space where we can exist in each other's head. I'm paraphrasing, of course. And I just wanted to ask you what you really meant. Do you think that in many ways, um, the world is sort of losing its ability to see each other in terms of, are we sort of becoming less tolerant? Actually, uh, the politics of division, it is in vogue, and it is at a great speed. It is dividing people. It is people. It is dividing people across race, class, gender, territory, geographical lines, borders. Then, and I don't know what all the extra criteria they adapt. They will say migrants, non-migrants, they are white, black, everything. All types of discrimination is practiced to divide the people. So in this, when the world, the people, some people who are trying to divide the people, it is only stories who can unite them. See, I will give you a small example. I have given this short story. This has been published and it has been accepted by the English speaking people. They are so fascinated about it. They have so many people expressed it to me. And we are two different people, two different individuals, and two different people who thought process different, and our culture different, our faith is different, everything. Then we are innovated through these stories. They talk of, I write about the characters, I write about the philosophy which I pursue, and they get near me due to these factors. That is where the story unites the people in a universal way. That's what I meant. So storytelling is the thing which is Yes. highly necessary in these days, And because I think storytelling is one. It will be one to one. Even if it is a digital media, when somebody speaks we hear it, and when somebody enacts and we see it, everything is giving a one to one experience to us. It gives us some nearness. it does. And I think in your stories, in some ways, you have actually talked about the nearness. I mean, your stories are quiet. Your stories are about ordinary lives in a way, and you sort of vividly describe a world that is, your world, which is but it is so beautifully observed, as I think I spoke to your publisher and the other stories, and Stefan said that it was, there are it's powerfully observed, it is humorously observed, it is Yes. poignantly observed. And I think these are the stories that you said, as you said even in your speech, no story is too small. But apart from this, what's the day after like winning the Booker? What was the first thing You that you know, did? the moment was exhilarating, and it was incredible experience which cannot be put into words. Actually, how to put it, it is such a great excitement of my whole of my life, and family. My family was with me, and all of us. We were, my children actually, they hooted, they shouted, they embraced, hugged everything, and we were out of normal, what you say, decency. That is that is the Indians, first reaction. yeah, that you are uh, Indians in this whole stage of very yes, stiff, Indian, yeah. stiff But upper lip yes, British. yes, yes.
And then from the next day itself, the whole day we never had any, I never had sleep. And from next day onwards, from yesterday onwards, from since about 7 o'clock in the morning, I'm only interacting with you people only. BBC and then journalists continuously. I am with journalists. That is the thing I am following. But back home there is celebration. People are giving me a lot of love and they are giving me lot of encouragement. And in my place, Hassan, just sent me a video wherein they had erected a big poster of mine and people all around standing with lot of flower petals in their hands and they are just enjoying shouting my name and throwing all those petals on that hoarding. Yeah, it was something. It was something. I think all of India is doing this. I think it is a very proud moment. And I think one of the questions I also wanted to ask you is that, you write about, you said when we spoke last, you said that, for women, it is blind obedience. And you question patriarchy, but the world that you have created, and even in the story of the crafting of the novel, of the short stories and the Heart Lamp, it has been really a village of women that have helped you in many ways. Your publisher in your editor in and the other stories is Tara, who you thanked, Yes, is Tara, is a Tara woman. Tabler. Yes, there is, your translator is a woman. Your whole table was full of women. You have your Yes, this thing. So I wanted to talk to you about the solidarity that women have and how, in some ways, you at 77 have yes, when people are saying at about 75 they say this is we've lived our best days, you're now living your best days, so you have hope for all of us. So yes, what yes, can you talk about yes, that, about sort of being ever young and having also the solidarity of women, being populated by women in many ways? yes. Last line बोलते हो तो. Not just about the women sisterhood that you have, but also like how do you feel young and you're still continuing after Yes, 77? Yes, yes. Um, the thing is, Mandira, um, I don't count my age. That's one thing. I always I feel enthusiastic. I feel enthusiastic in meeting people, in writing new things, and in creativity. I feel very happy and I want to be very active and except by sometime I have to sleep. I have to get a good sleep, and after that sleep, I mean, I'll always be with the people. I will not be all alone. I will be writing only when people are around me. I don't want to go to an exclusive place, and I don't want to be a very single person in writing. People all around will be they will working, talking. They will be doing their duties, and I will be writing here. People are my strength, and they love they share with me. They love they give to me. It is my strength. That way I feel young and I want energetic, and I want to do. I am hopeful to do so many projects there before me, and I want to complete them. Writing your autobiography? Yes, I am doing my autobiography also. It has to be completed. Even the publisher, she is a woman, and Akshata, and she is after my return. She will come and stay with me for a week and see that it is completed. So in a way that you said that in you write in the same way as the stories that you come from in this world which is inhabited by people, तो शोरगुल में काम करना आपको पसंद है, हाँ, right? हाँ, ऐसा ही काम करना मुझे पसंद है. Yes, I like it.
आपसे एक साथ और साथ चीज में। और आपसे एक और चीज पूछना चाहती थी कि आपने आपकी जो जुबान जो आप घर पे बोलती हैं वो तो उर्दू है, राइट? पर हाँ। आपने कन्नडा, अ, हम्म। कन्नडा में कन्नडा में आपने लिखा और हम्म। आपने कन्नडा को अपना माध्यम बनाया। सो आई हाँ। वांट तो उस ये जो हम जब कहते हैं ना कि एक ही जब हम कहते हैं कि इंडिया इतना इतना डाइवर्स है, हम हम्म। इतने हम हमारे पास हमारी हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। उसमें जैसे ये आप इस दोनों जबानों में उनकी जो हम्म। उनका जो स्ट्रेंथ है आपने कन्नडा में लाया, राइट? विच हाँ। इसीलिए हाँ। इसीलिए दीपा टॉक्स अबाउट हाउ शी has to also do Urdu to sort of हम्म। understand Yes. your Kannada. So can you talk about ये दोनों ये जो हाउ हैव यू लर्न फ्रॉम बोथ दीज लैंग्वेजेस एज उर्दू जुबान से जो आपने जो आपकी भी है और कन्नड़ा भी आपका है, उसमें हाउ डू यू ब्रिंग देम टुगेदर? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम देम? या वेरी इंटरेस्टिंग, यस आई लाइक इट। ये जो है कन्नड़ा एक ऐसी जबान है जिसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट लिटरेचर है। जो उसका एक बेसिक अंडरलाइन जो है उसमें, जो कन्नड़ा का वो है प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अथॉरिटी इज लिटरेचर, ऐसा बोलते हैं कन्नड़ा में। और उसके मुताबिक पूरा बहुत सारा पुराना, हजारों साल पुराना लिटरेचर भी ऐसा ही है। और अब जो रिसेंट टाइम्स में, ऐसे अबाउट 50 years बैक, जब से कर्नाटका में बहुत सारे मूवमेंट्स एक्टिव थे, जैसे फार्मर्स मूवमेंट, इट वाज एट इट्स पीक, दलित मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, एंड थिएटर एक्टिविज्म, लैंग्वेज एक्टिविज्म, एंड लिटरेचर में एक आया बंडाया साहित्य संगठन है, दैट इज ए मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। उसमें जो है राइटर्स, वो खुद लिखते भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। वो अगर जरूरत पड़ गए तो आम आदमी के साथ रास्ता रोको करते हैं, स्लोगन्स मारते हैं, जेल को भी जाते हैं, और आदमी के साथ रहते हैं। आम आदमी का साथ देना उनका काम है। सो ये संगठन जो जो बंडाय साहित्य संगठन है, इसके अंदर अब तक कन्नड़ा लिटरेचर में जो लिटरेचर है, ज्यादातर मेल ओरिएंटेड, लिखने वाले भी मेल पर्सन्स और पढ़ने वाले भी मर्द लोग ही रहते थे। और उसमें भी जो लोअर कास्ट लोगों को ये एजुकेशन ही मना था, इसमें अपर कास्ट लोग ही लिखते थे और अपर कास्ट लोग ही पढ़ते थे। मगर इस मूवमेंट के जरिए से एक ऐसा माहौल बना, ऐसा चेंजेस आए, एक दलित लड़का भी अपनी जबान में गाने लगा, कन्नड़ा ही है मगर उनका डायलेक्ट अलग है। वो कन्नड़ा लैंग्वेज में गाने लगा, कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखने लगा, पोएम्स लिखने लगा, प्रोज लिखने लगा। और एक औरत भी अपना मन एक्सपोज करते गई, वो भी खुद लिखते गई। एक लैंग्वेज का भी एक शेप बनते गया। साथ में ऐसा हुआ, जब तक कन्नड़ा लिटरेचर में एक मुस्लिम सेंसिबिलिटीज का ऐसा खास रिकॉर्ड नहीं था। जब ये मूवमेंट्स के जरिए उस वक्त के यूथ्स, यानी मेरे ये ग्रुप वाले और मुझ जैसे यूथ जब इन्वॉल्व हुए, उनको ये सब एक्टिविज्म का, ये सब सोशल एनोमलीज का और एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स का बहुत सारा साथ मिला, बहुत सारा मटेरियल मिला। और बाद में वो मोमेंट्स का काम जरा कम होते गया, मगर जब जो माइंडसेट बने उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग, मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम यूथ लिखना चाहते थे, मगर सवाल हमारे सामने ये था कि क्या लिखे, क्या लिखे, किस बारे में लिखे। अब मैं लिखना है तो
एक मुस्लिम लड़के के एक लव लाइफ के बारे में लिखो, या हिंदू लड़के के लव लाइफ के बारे में लिखो, या अगर एक कोई मुस्लिम लड़की के बारे में लिखो या हिंदू लड़की के बारे में। अच्छा, तो कोई भी नाम तो चुन लेती हूँ। तो अगर नाम चुन लिए, मैं अहमद और सलमा नाम चुन लिया, तो पूरा उसका बैकग्राउंड लाना पड़ता है ना, उसकी शादी या उसके पेरेंट्स, उसका नमाज, ये माहौल तो लाना पड़ता है ना एक स्टोरी में। तो क्या मैं ऐसा एक माहौल लाई तो कनाडा के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा, जब ये एक्सप्लेन करना था, ये माहौल बनाना था, तो बहुत सारे उर्दू वर्ड्स यूसेज में लाना था। मस्जिद का मैं कुछ अल्टरनेटिव नहीं दे सकती, कनाडा में मस्जिद ही बोल सकते हैं, मगर मस्जिद, नमाज का कोई अल्टरनेटिव ऐसे ही यूज करना पड़ता है मुझको। तो क्या ये वर्ड्स एक्सेप्ट होते हैं कनाडा वर्ल्ड के लिए, ये सवाल आता। तीसरा, जब मैं ये चीजों से लिखते गई, तो कौन से ईद के बारे में लिखूं, रमजान के बारे में लिखूं या दीपावली के बारे में लिखूं, ये सब सवाल जो हमको आते गए राइटर्स को, तो बटाया साहित्य संगठन में हमको क्लैरिफिकेशन मिलता गया। और इतना एक जबरदस्त माइंड बना, एक थॉट प्रोसेस बना, जो सोशल ओरिएंटेड मटेरियल पूरा मुझे वहां से मिला। और इधर उर्दू है, उर्दू का तो ऐसे ही रिच ट्रेडिशन है सालों से। उर्दू के पोएम्स हैं, पोइट्रीज हैं, उर्दू का मटेरियल है, उर्दू के बहुत सारे रोशन चराग हैं हमारे पीछे देखने के लिए। मेरे हिसाब से मुझे उर्दू का भी बैकग्राउंड है और कन्नड़ा का भी इतना रिच बैकग्राउंड मिला। ये दोनों जब मैं ब्लेंड करती गई, तो ये नतीजा निकला आपके सामने जो है वो। Live in Urdu, written in Kannada, and then translated in English to become this incredible thing. Thank you. I just wanted to ask you the last question. I believe I spoke to your husband, Mushtaq Saab, yesterday, and I asked him. ओके। I asked him. He said that one of the things that attracted him to you was that you were very bold and very intelligent. And I said, can you? Has she ever listened to the word no? And he said never. यस। Okay. Can you this thing? So is you have done your rebellion. You started, I think when you started when you were a young child, when you learned how to ride a cycle when nobody used to learn how to ride. You were the first woman in your family to choose your own husband, love marriage. यस। आपने किसी की बात नहीं सुनी, कोई दायरे बंद नहीं किए. What is the next bastion for you to break? Yeah, throughout I have broken all the stereotypes. एक तो मैं कन्नड़ा लैंग्वेज में पढ़ी, उर्दू Yeah. उर्दू ही पढ़ते थे मेरे खानदान की औरतें। मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ी, और उसके बाद में पूरे एक्टिविज्म में आई, कोई नहीं आया था। और हस्बैंड को भी मैंने ही सेलेक्ट किया, वो मेरे सीनियर थे कॉलेज में। एंड ही लाइक्ड मी एंड ही अप्रिशिएटेड मी फॉर माई बोल्डनेस। मैं पूरे डिबेट्स में हिस्सा लेती थी, मैं पूरे लिटरेरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी, और जो भी बोलना है मुंह पे बोल देती थी। मैं किसी से डरने वरने का कुछ मामला नहीं था। he appreciated those qualities and he decided he has to get married to me only. उसके बाद में he is the person who encouraged me to write, क्योंकि बाद शादी के बाद हालात बिल्कुल अलग होते हैं। ससुराल में रहना पड़ता है, सोसाइटी के एक नॉर्म्स को अवॉइड करना पड़ता है, और हमारा जो इकोनॉमिक पोजीशन भी सुधारना होता है। अच्छा तो नहीं था, उसको भी सुधारना पड़ता है। बच्चे और जो उनका तो देखभाल करना होता है। ये सब परेशानियों में लिखना लिखना तो भूल ही जाते हैं। बट ही स्टूड बाय माय साइड रखे रॉक, और हर वक्त मुझे एनकरेज करते रहे कि जाओ पढ़ो, लिखो, लिखो, तुम लिखो। और ही वाज द मेन पर्सन who influenced me to get admission at law college. वो बोल रहा था, आई वॉन्ट टू सी एज एन एडवोकेट, तुम प्रैक्टिस ही करना है,
कॉलेज को जाओ, प्लीज गो टू कॉलेज. He requested me, he dropped me at the college, he picked me at the college. I had children then. Even then he supported me. And one more thing he did was, he provided me the help of maids. Though his earning was not great, he provided me a cook, he provided me a maid, and he never wanted me to do household chores. He would get upset. अगर मैं झाड़ू पकड़ूंगी भी तो वो बहुत सारा अपसेट हो जाता है और मेरे हाथ से छीन लेते थे और बोलते यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू गॉट बेटर जॉब टू डू, प्लीज गो एंड डू दैट. इस किस्म से मुझे जिंदगी भर एनकरेज करते आए. दैट इज हिज ग्रेटनेस. एंड we have completed March, in the month of May, we have completed our 51 years of marriage anniversary. Congratulations. Two very big things then. 51 years of my anniversary and a booker. I mean, what else could you want for the 51 years of anniversary? And उन्होंने कहा था कि apart from him, बाकी everybody else is a lawyer. In your Yes, family, yes, your yes. daughter-in-law is मेरे a तीन lawyer. इन बिटवीन द एडवोकेट्स. सिर्फ वो एक ही नहीं, मेरे सन्स इन लॉ भी सर्वाइव होना है ना हाँ, एडवोकेट वाइफ्स के साथ. इट्स perfect. यस. So family of एंड वी आर lawyers and सर्वाइविंग. एंड वी एंड वी आर सर्वाइविंग क्योंकि एक लव इज द बॉन्ड between us, between husband and wife, children, sons, daughters-in-law, everybody. It is the bonding we are having. और वो एक अटूट बंधन है चाहत का, वरना कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता. it's true. That's beautifully said. Thank you so much. And thank you for taking time to talk to us. Congratulations Thank again. you.